Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Akansha Parimu. Let's take a look at what made news this week. Delay in Naltal power project worsens crisis in POGB ahead of harsh winter. In POJK, inflation soars as corruption and mismanagement persist. Srinagar celebrates International Day of Older Persons, promises them respectful life. J&K's celebration of Maharaja Singh's anniversary preserves Dogra heritage. And in our special section of Incredible India, let's explore the culinary delights of Jharkhand region, which are being revitalized with a modern twist in today's vibrant food scene. The inability of the local administration in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan to provide adequate infrastructural amenities to its people is evident. Projects crucial for surviving the region's harsh winters have been delayed for over 15 years. One such example is the Naltal power project, which began in 2009 but has faced significant delays, raising serious concerns about POGB's financial and infrastructural challenges. We have a report. The people living in the hilly areas of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan are bracing for harsh winters. However, an even harsher reality awaits them: severe power cuts and a lack of basic amenities with no hope of relief in sight. For 15 years, the people of POGB have awaited the completion of the Naltar power project, which could have provided much needed relief for their daily lives and businesses. Yet, the administration remains silent in response to their questions and demands for basic necessities. सर्दियों में गिलगित शहर में 20-22 घंटे की लोड शेडिंग होती है और ये 2009 में ये मंसूबा जो 16 मेगावाट पन बिजली घर की तामीर का मंसूबा HMC कंपनी ने लिया और आज 2024 है और ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं है। तकरीबन 15 साल गुजर गए और 16 मेगावाट का ये मंसूबा पाए तकमील को नहीं पहुंच सका। आज हमने यहाँ पर इस पूरे मंसूबे पे होने वाले काम का जायजा लिया तो ये मंसूबा हुकूमत जिस तरह से बता रही थी कि अक्टूबर के एंड तक मुकम्मल होगा, कोई मुमकिन नहीं है कि ये अक्टूबर के एंड तक मुकम्मल हो। ये मंसूबा अगले साल ही जो है वो मुकम्मल हो पाएगा अगर तेज रफ्तारी से इस मंसूबे पर काम किया जाए। ये 15 साल ताखीर का नतीजा ये निकला कि इसकी लागत जो है वो 6 अरब 20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लागत भी बढ़ गई और काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। This critical situation could threaten the survival of the people in Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan. In addition to electricity shortages, such prolonged delays in crucial projects place a significant economic burden on the region. ये ठेका उन्होंने लिया जिनका ये काम ही नहीं था। अब लेने के बाद मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए तजुर्बे किए गए इन मंसूबों को मुकम्मल करने की और अभी तक 15 साल गुजरने के बाद 16 मेगावाट का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पा रहा। गिलगित शहर और मुजाफात में बदतरीन लोड शेडिंग जिसके नतीजे में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होता है। Despite having ample natural resources, the residents of Pakistan-occupied Gilgit-Baltistan still struggle for uninterrupted electricity, clean water and education, basic amenities that the government has promised but fails to deliver year after year. Moving on, severe inflation in Pakistan-occupied Jammu Kashmir has exposed several irregularities and loopholes in the governance, with the trader community bearing the brunt of the government's flawed policies. In protest against the local government's inability to control soaring prices, traders in POJK organized demonstrations highlighting the rampant inflation they endure daily. We have a report. The trader community of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir continues to grapple with soaring inflation and the administration's failure to address the worsening economic crisis.
The absence of clear regulations governing trade and business has fueled chaos, leaving POJK in a state of disarray and uncertainty. रियासत का किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। किराया जो आदमी अगर 10,000 रुपया ले रहा है, वो ताजिर को ये कहेगा कि मैं अगले साल आपसे 20,000 लूंगा। रियासत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि उसको रोके। कोई कानून किरायादारी एक्ट नहीं है कि जो जिसका तनासब हो कि बेसिक किराया कितना होगा, सालाना कितना बढ़ेगा, और इसका एडवांस जो अगर जो आदमी लेगा उसका दुकान और मकान खाली कराने का क्या तरीकाकार का तयन होगा। ये चीजें सारी रियासत की जिम्मेदारी है। While the trader community struggles under the local administration's inability to resolve POJK's issues, the administrators themselves continue to enjoy privileges inaccessible to the public. Ironically, these luxuries are funded by the very taxpayers who bear the brunt of the failing system. किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसे ऑफिसर बैठे हुए हैं जो लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, जिनको गाड़ियां हैं, जो टीए लेते हैं, लेकिन अगर उनको आप कहेंगे कि यह आपके फराइज में है कि आप हमारा ये काम करें उनके महकमे के मुतालिका, जब तक आपसे रिश्वत नहीं लेंगे, जब तक आपकी सिफारिश नहीं होगी, या जब तक वो आपके साथ कुछ तय नहीं करेंगे, वो आपका जायज काम नहीं करेंगे। जहां आप अगर ताजर 10 रुपए की गलती करे तो आप उसको हथकड़ी लगाएं, आप उसकी तजलील करें, आप उसको जो है ना थाने में बंद करें, और आप जो है ना 50-50 हजार रुपए खुर्द-बुर्द करें, आप रिश्वत लें, आप जो है ना वहां पे बदयांती करें, और आपके लिए कोई कानून नहीं है। इस किस्म के लोग जो रियासत दुश्मन है, जो यहाँ के लोगों के दुश्मन है, जो लोगों के मसाइल में इजाफा करते हैं, उन लोगों की कतई हमें जरूरत नहीं है, चाहे वो किसी यहाँ पे जो है वो इंतजामिया में या वो किसी और इदारे में है। Residents across Pakistan-occupied Jammu and Kashmir remain frustrated, as despite living in land rich with natural resources, they struggle to survive without basic necessities like electricity and clean drinking water. अगर यहाँ पे बिजली सस्ती हुई है तो मैं आप लोगों की मौजूदगी में ये कहना चाहता हूँ कि बिजली सस्ती का फायदा लोगों को नहीं हो रहा। कि क्यों नहीं हो रहा? कि आज भी बिजली के महकमे के लोग जाके लोगों के घरों के जो है ना वो जिनके नाम पे मीटर है उनके मोबाइल नंबर ले रहे हैं, और वहां पे जो है ना वो शिनाख्ती कार्ड की फोटो कापियां ले रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जब इन्होंने कनेक्शन लिया तो ये कितने किलो मेगावाट था इनका कनेक्शन। 1 किलो मेगावाट पे अगर लिया हुआ है तो आज इसकी बिजली 5 किलो मेगावाट जो है ना वो चल रही है। तो लिहाजा ये इसको हम नए सिरे से नोटिस देंगे और ये और पैसे जमा करवाएगा। एक चोर बाजारी है, हेरा फेरी का तूफान है, और कोई जो है ना पूछने वाला नहीं है। एक आजाद कश्मीर में हुकूमत जो मिल्क शेक वाली बनाई गई है, वो सारे ये समझते हैं कि हम वजीर हैं, हम हुकूमत में हैं, लेकिन इख्तियार किसी के पास नहीं है। ना कोई किसी से अफसर से ये पूछ सकता है कि तुमने ये बदमाशी क्यों की है। Corruption runs rampant, essential amenities remain out of reach, and dissent is brutally silenced. These are the harsh realities of life in POJK, where hope fades and struggle has become an inescapable reality under an incompetent puppet government. Moving on, Srinagar city in India's Union Territory of Jammu and Kashmir recently celebrated International Day of Older Persons, promising them the respect and love they deserve. The event by the Molmoj Foundation drew in professors, bureaucrats, civil society members and other health professionals under one roof to celebrate the contributions of the elderly people for their families and the society. Take a look. Elders deserve better. With this heartfelt tagline, the Molmoj Foundation in India's Union Territory of Jammu and Kashmir organized an event on the occasion of the International Day of Older Person in Srinagar city. The event aimed at empowering senior citizens and elderly people and recognizing their contribution made throughout their lifespan. More than a celebratory event, the occasion aimed to raise awareness in society, particularly among younger generation,
about the importance of elders and the sacrifices they have made for the betterment of their children. The initiative by the Mall Moj brought in experts from various fields including professors, retired bureaucrats, doctors, civil society members and senior citizens, highlighting the significance of the program for older people. एक प्लेटफॉर्म मान लीजिए आप, और उनकी देखभाल के लिए ये खुसूसी एक ये जो इन्होंने यहाँ ये मॉल मौज फाउंडेशन के नाम से शुरू किया है, इस लिहाज से सीनियर सिटीजन्स को इससे काफ़ी सहूलियात और आइंदा जो इनका जो प्लान है वो बहुत वसी है। इस लिहाज से सीनियर सिटीजन्स को यहाँ वो चीज़ें जिनसे वो परेशानी में उनको मुब्तला नहीं होने देते हैं, ये उनकी तरफ इनका खुसूसी ध्यान और तवज्जो है। The Mall Moj Health Center, an initiative by the Kashmiri clinics, is dedicated to comprehensively working for the betterment of senior citizens by raising awareness and providing a safe haven for seniors. It seeks to combat the unfortunate prevalence of mistreatment experienced by many elderly individuals. Moreover, the caregivers ensure a safe and secure environment for them without negligence. जब सीनियर्स हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी पेशे में हो, जब वो घर पे बैठा रहता है और जवान लोग बाहर निकलते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ नेग्लेक्ट रखता है, सेंस ऑफ वर्थलेसनेस रहता है। तो उस वर्थलेसनेस को ओवरकम करने के लिए हम ऐसे प्रोग्राम रखते हैं ताकि उनको ये लगे कि वी स्टिल हैव द सेम इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी। जो लोग हैं वो अभी भी हमें वैसे ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इम्पोर्टेंस भी। और आज के दिन के लिहाज से में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज हम एक डेडिकेट कर रहे हैं एक टोल फ्री नंबर 180020030337 जो कि सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ के लिए और अदर इश्यूज़ के लिए। दूसरा, हम आज अपनी मदर्स को, काफ़ी सारी मदर्स हमने शॉर्ट लिस्ट की हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी काम किया है, रिटायरमेंट के बाद भी अपने गोल्डन ईयर्स में भी उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। तीसरा, हमने आज प्रोग्राम रखा है कि आज हम एम्बुलेंस डेडिकेट कर रहे हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये हेल्थ फाउंडेशन के तवस्सुल से उनके साथ कोलैबोरेशन में हो रहा है। और चौथा ये रहेगा क्या, रिसेंटली हमारे जो मेंटोर है, जो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं हमारे मॉल मौज फाउंडेशन के, मोहम्मद शफी पंडित साहब, उनकी मेमोरी में एक सेशन होगा। The program was dedicated to the first IS officer of Jammu and Kashmir, Mohammad Shafi Pandit, who contributed a lot to the society. Moreover, the event also felicitated the elderly people for their contribution to the development and betterment of society. हमें चाहिए कि अपने बुजुर्गों का हमेशा ख्याल रखें। ठीक है, NGOs बनती हैं, बुढ़ापे के क्लिनिक बनते हैं, मोल मौज क्लिनिक बनते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने वालिदैन को उनके रहम करम पर छोड़ दें। जो सुकून एक बाप को, एक माँ को अपने बेटे की खिदमत से मिलेगा वो क्लिनिक पर नहीं मिलेगा। As violence and neglect towards the elderly rise in society, events like these become crucial for addressing the problem by raising awareness among younger generations to show the love and respect the elderly deserve. Additionally, these events help strengthen bonds between the older generations and their families. Moving on, the Jammu region of the Union Territory of India's Jammu and Kashmir recently commemorated the 129th birth anniversary of Maharaja Singh, the last reigning monarch of the erstwhile princely state. From business entrepreneurs, educationists, health professionals to artists and sportsmen, the event brought distinguished personalities from diverse backgrounds under one roof. The initiative was also a significant step towards preserving the Dogra heritage. Take a look. The Union Territory of Jammu and Kashmir in India, renowned for its breathtaking landscapes, rich history and vibrant culture, has also been a cradle of remarkable talent.
Recently, the 129th birth anniversary of Maharaja Hari Singh, the last reigning monarch of the princely state of Jammu and Kashmir, was commemorated with great reverence and enthusiasm. The event, organized by the Maharaja Hari Singh Social and Educational Foundation, presented the Excellence Awards for 2024 to 25, honored 23 distinguished personalities for their significant contributions across various fields in Jammu and Kashmir. The ceremony was graced by an illustrious gathering of business entrepreneurs, educationists, health professionals, senior writers, journalists and cultural artists from across the region. तो अपने आप को गौरवान्वित और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि ये मुझे इतनी गणमान्य व्यक्तियों में इस अवार्ड के लिए चुना गया और ये डोगरों का सम्मान अपने डोगरों द्वारा और डोगरा महाराजा द्वारा मुझे महाराजा हरि सिंह जो कि एक विजनरी महाराजा थे और हेल्थ केयर में उन्होंने ऐसे अपने समय में कार्य किए हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, SMGS हॉस्पिटल, SMHS हॉस्पिटल जो आज भी चल रहे हैं। इस तरह के विजनरी लीडर के द्वारा मैं अपने आप को समझता हूं कि मुझे हेल्थ केयर में सम्मानित किया गया। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं। The ceremony commenced with a traditional park, followed by the chanting of shloks and the offering of floral tributes to Maharaja Hari Singh, creating an ambience of respect and tradition. Adding to the celebration of Dogri culture, Sonali Dogra mesmerized the audience with her soul-stirring Dogri folk music, followed by a traditional folk performance by students from the Government Art and Culture Academy, Jammu. जब कहीं पे डोगरी को लेकर अवार्ड मिलता है तो और ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मैं अपनी डोगरी के लिए कुछ गा पा रही हूँ, कुछ कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। सो कुमरानी डॉक्टर रितु सिंह मैम हमेशा इस चीज़ को याद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। उनके साथ जब से मैं जुड़ी हूँ उनके रनवे डायरीज़ के साथ, तो तब से बहुत ज़्यादा इस लेवल के इवेंट्स हो रहे हैं जम्मू में और डॉक्टर कुमरानी रितु सिंह मैम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि डोगरी के लिए काम कर सके। सो आई थिंक बहुत बड़ी बात है और आज के दिन पर इतने सारे सीनियर लोगों को अवार्ड मिलना और उनके साथ मुझे अवार्ड मिलना आई थिंक बहुत बड़ी बात है। बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है और मुझे लगता है कि हमारे कल्चर को सर्वाइव करवाने के लिए और हमारे यहाँ के आर्टिस्टों को बूस्ट अप करने के लिए इससे बड़ा ओकेजन कोई नहीं हो सकता। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है महाराजा हरि सिंह सोसाइटी के द्वारा, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और जैसा कि अभी आपने इसमें लेक्चर्स में भी सुना कि महाराजा खुद आर्ट और कल्चर को बहुत प्रमोट करते थे और मुझे लगता है कि अगर उनकी जो वंशज हैं आगे वो इसी तरह इस कल्चर को प्रमोट करेंगे तो मुझे लगता है कि डोगरी कल्चर जो है हमारा वो प्रिजर्व हो सकता है, जो कि आपने देखा अभी वैनिश हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लोग पंजाबी कल्चर या दूसरे कल्चर्स की तरफ जा रहे हो। More than an award ceremony, the event was an initiative towards empowering local talents and giving recognition to people for their commendable contribution in diverse fields. And through facilitating them with various awards, the foundation-led event also aimed to preserve and promote the Dogri heritage of the region. जहाँ ये अवार्ड्स के सवाल आता है कि लास्ट 23 इयर्स से हम ये फाउंडेशन चला रहे हैं। 23 years ago we started with the concept of maybe just 1 or 2 awardees who were going to be mentors हमारे नेक्स्ट ईयर अगली पीढ़ी के लिए। जितने भी हमारे महाराजा हरि सिंह के सोशल एंड एजुकेशन फाउंडेशन है, हमारे जितने भी DPS स्कूल्स हैं जम्मू, कटरा एंड नागवनी में, हम इसी फाउंडेशन के तौर चलाते हैं वो स्कूल। सो वीकर सेक्शंस को हम पहले देते थे बहुत सारा। वी यूज्ड टू इवन गिव देम फाइनेंशियल एड, जैसे स्कॉलरशिप से दी, यू नो, स्पोर्ट्समैन में कोई अच्छा हो तो उनको स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करते थे एंड वी यूज्ड टू अवार्ड देम आल्सो। फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड इवॉल्विंग द अवार्ड्स एंड 4 years ago वी स्टार्टेड इट ऑन अ मच बिगर स्केल, जहाँ पे हमने एक्सपर्ट्स को लेके वी actually understood the expertise in every field, be it education, sport, medical, social, cultural, from every field, you know, science and technology, agriculture, सब phase में से हमने experts को चुने। Events like these not just provides a platform to the local talents and boost up their morale, but also are crucial to preserve the local cultural heritage of the region. Jharkhand, renowned for its rich tribal heritage, is witnessing a surge in the popularity of its indigenous cuisines.
Restaurants across the state are now introducing these tribal delicacies to a broader audience while also emphasizing the cultural significance behind each dish. Join us on a culinary journey through Jharkhand as we explore how traditional cuisines are being revitalized with a modern twist in today's vibrant food scene. Jharkhand in eastern India is home to diverse tribal communities, each with unique cultures and culinary traditions. Tribal cuisine here relies on locally sourced ingredients like bamboo shoots, millets, leafy greens and forest produce, with dishes like duska and aru saag as staples. Cooking often involves minimal spices, preserving the natural flavors. Ajam Emba, a restaurant dedicated to indigenous cuisine, has been serving these traditional dishes for years. The restaurant offers a variety of culinary delights made from wild herbs, bamboo shoots, rice, millets and meats sourced directly from the forest and natural surroundings. हमारा जो भी आदिवासी खान-पान जो कि जंगलों से वनोत्पाद है या फिर मौसम पे आधारित है, सीजन के हिसाब से आता है। हर में एक अपना स्वाद तो है ही है, स्वाद के साथ में इसके विशिष्ट गुण भी है और जो कि पौष्टिकता के हिसाब से या फिर स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो उस हिसाब से मैं सीजन वाइज खाना यहाँ पे लोगों को प्रस्तुत करती हूँ। Whether it's a simple bowl of rice or a thali featuring regional specialities, Jharkhand's culinary delights are attracting food enthusiasts from across India and beyond. मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ आने का। मैं अपने दोस्तों से बहुत बार इसके बारे में सुना था, बट आज पहला बार ऐसा हुआ कि हमें मौका मिला और हम लोग यहाँ पे आए। टेस्ट वाइज वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से, और जिस तरह का ट्रेडिशनल वे में ये लोग खाने को सर्व करते हैं, दैट इज ऑसम। With growing awareness of sustainable organic and regional foods, Jharkhand's tribal cuisines are gaining recognition for their nutritional value and connection to nature. This shift towards serving tribal food in urban restaurants marks a revival of the region's tribal traditions. For instance, Café de Arte in Ranchi offers a fusion menu featuring tribal-inspired dishes alongside Korean cuisine. Decorated with sorai and kovar murals and other tribal elements, the cafe showcases Jharkhand's indigenous heritage while creating a welcoming atmosphere for guests. We thought that we too have so many ingredients and that can be brought to mainstream food, which is not yet brought, because we have, you know, like samosa and other things, but apne tribal cuisine or organic cuisine you can say, that was not in the mainstream. So that was the idea, to bring the mainstream, our cuisine into mainstream food. What I love about this place, it's a mix of tribal culture and Korean food. So this is a very new concept in our city, Ranchi. By promoting tribal traditions in a modern setting, contemporary cafes are helping to preserve Jharkhand's rich heritage. As more restaurants highlight these unique flavors, indigenous cuisines are said to remain a vital part of the state's culinary identity. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.